Hi guys, welcome back to our channel with a new name and the new season, Travel Recipes. As you know, if you don't use the correct recipe to cook your food, then it will spoil your food as well as your mood. The same is with the travel. If you don't use the correct recipe and the correct plan to execute a travel, then you might ending up spoiling your trip. Through this channel, we'll provide you the best ways to travel to different places, which will always keep you mood on. But remember, don't try this recipe at your home. Today, we'll take you to the Kheer Ganga near Kasol. Kheer Ganga is famous for its hot water springs at the height of 3000 meter. Yes, you heard it right. I also cannot believe it like you. So guys, come and join me to find out if it actually exists. Let's go. These are the main ingredients for this travel recipe. 1 liter water, smartphone, power bank, money, good trekking shoes, sunglasses, chocolates, thermal wear and one energy drink. Now I will tell you step by step recipe to cook this trip to Kheer Ganga in a best way. हम अपनी जर्नी दिल्ली एयरपोर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैंने एक टैक्सी बुक की है जो मुझे बस स्टैंड तक ले जाएगी और ये है हमारी बस विच आई बुक फ्रॉम द रेड बस विच विल डायरेक्टली टेक अस फ्रॉम दिल्ली टू कसोल वाया दिस रूट इन ओवरनाइट जर्नी। हम ओवरनाइट जर्नी करते हुए सुबह भुंतर तक पहुंच गए हैं। ये आप नीचे पार्वती रिवर को देख रहे हैं। भुंतर से कसोल की रोड बहुत ही नैरो है। After the long journey of 15 hours, we have reached Kasol, which is beautifully located along the river Parvati. We will stay full day today in Kasol. So it's finally morning in Kasol. This is the small bus stop of Kasol. हम बस से कसोल से पहले बरसानी जाएंगे और ये है उसका टाइम टेबल और फिर बरसानी से हम ट्रैकिंग करते हुए खीर गंगा तक जाएंगे। We are traveling in a local bus towards Barsani village and you can see snow covered peaks everywhere. हाँ, अब बरसानी विलेज हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमें पैदल चल के खीर गंगा तक जाना होगा। यहाँ आप बस की जगह प्राइवेट टैक्सी में भी आ सकते हैं। यहाँ पर खीर गंगा जाने का रास्ता मार्क किया हुआ है बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। यहाँ से खीर गंगा जाने के दो रास्ते हैं। एक है ब्लू लाइन जो कालका से जंगल से होते गुजरता है विच इज़ नॉट सेफ और दूसरा है ये रेड लाइन जो वाया रुद्रनाग अराउंड 14 किलोमीटर है विच इज़ सेफ एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस रूट। वाओ, ट्रैक की स्टार्टिंग में ही क्या व्यू है। यही है, चोटी है। Behind this is Khir Ganga. There we have to go. That bridge we have to go. Oops, we have to go slowly. Finally, we reached the bridge. See the water. Wow, how clear it is. See the view. Here is the Khir Ganga mark. You have to go left. Oh, let's go. I am too much tired now. Too much. See, there is some snow over there. Let's have a closer look.
It's too cold. So we are at Rudranag. See the beautiful waterfall from the melted snow. अब हमें ये पार्वती रिवर के ऊपर बना हुआ ब्रिज पार करना है. You can see below there is a purest form of water from the melted snow. अभी 2 घंटे में हम सिर्फ 6 किलोमीटर ही आए हैं. अभी 8 किलोमीटर और जाना बाकी है. अब यहाँ से आगे का रास्ता मुश्किल है. There uphill we have to go. Now we are gaining energy. Wow, snow everywhere. There is no place left which is not slippery. We come from there, but we have to go there. Let's go. I am feeling dehydrated. Wow, what a sunlight. This direct sunlight is eating up all my minerals. Oh my god, it's too slippery. One wrong step and I'm gone. Wow, this route is getting more narrow as we go closer to Khirganga. That's the river Parvati below. We have come around 13 kilometers and that's the last 1 kilometer hike. मेरी बस हो चुकी है. क्लास का आधा किलोमीटर सबसे मुश्किल था. Let's go. Finally, we have reached the Khirganga campsite at a height of 3000 meters. It was hell of a trek. See the view of the tents everywhere. आज रात हम इन टेंट में ही बिताएंगे. एंड दिस इज खीरगंगा स्पेशल कैंप फायर. अब सुबह हम और ऊपर जा रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. द खीरगंगा हॉट वाटर स्प्रिंग्स एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर. फाइनली वी आर हियर. I cannot believe my eyes. It actually exists at this height. Wow. Water is unbelievably hot in these snow-covered peaks. Now it's time to take a holy dive, जिसके बिना ये ट्रिप अधूरा है. वाह. होली बात के बाद मैं थोड़ा और ऊपर जा रहा हूँ स्नो कवर टेम्पल की तरफ. ये मान्यता है कि यहाँ पे शिव जी ने 3000 साल तपस्या की थी. अब वक्त आ गया है हमें यहाँ से वापस जाने के लिए. हम बरसानी विलेज की तरफ निकल पड़े हैं इन सभी यादों को लेते हुए. Please never ever throw the plastic on the way, even if your luggage is full. We are back to the bridge over Parvati at Rudranag. We are at the first bridge where we started the trek. Finally, we are back at the beautiful point in Barsani village. बस से मैं बरसानी से कसोल जा रहा हूँ. फिर कसोल से मैं वाया भुंतर दिल्ली जाऊँगा. एंड आई एम लिविंग बिहाइंड ऑल द ब्यूटीफुल लैंडस्केप इन द लैप ऑफ हिमालयाज एंड हेडिंग बैक टू माई होम और मे बी हेडिंग अवे फ्रॉम माई होम. इफ़ यू फॉलो दिस ट्रैवल रेसिपी विद पेशेंस, this travel will definitely taste best and keep your mood on for the next trip.